So hello everyone, welcome back to another video. आज I think this is episode 2 of our Just a Thought series. I didn't really know कि मैं ये series बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा. I didn't even started with the thought of कि ये series होगी. वो एक बहुत random thought था and उस पर मैंने पहली वीडियो बना दी थी. It's 10:55 in the night on the 26th of August. We are talking about the concept of God today. Again, this is a very random thought. मैं सोने ही जा रहा था, मुझे पता है मैंने पहले एपिसोड में भी ये बात बोली थी. ऑलवेज जब मैं सोने जा रहा था मेरे को ऐसे थॉट्स आते हैं एंड आज मेरे को एक फीलिंग आ रही थी कि आज आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस. वो मेरी दोस्त है जिसके बारे में मैं पहले एपिसोड में बात कर रहा था, उससे मैं अभी बात कर रहा था एंड आई टोल्ड हर दैट आई एम गेटिंग अ फीलिंग दैट आई वुड बी रिकॉर्डिंग अनदर वीडियो अबाउट दैट सीरीज अगेन. आई डोंट नो रात को ही मेरे को ऐसे क्यों थॉट्स आते हैं एंड it's just random and I feel like I can share it and हो सकता है कुछ लोगों को इसमें से वैल्यू मिले बट मेनली मैं सच बताऊँ तो मैं इन्हें बनाता इसलिए हूँ ताकि I really want some place to actually express these thoughts and just thinking that some people are going to be watching this and some people are going to be maybe connecting with this or maybe like scrutinizing me कि क्या बकवास कर रहा है. बट ईदर वे इट इज़ बीइंग हर्ड. अब उसको किसी को अच्छा लगे किसी को ना अच्छा लगे इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम बट या एटलीस्ट आई एम एक्सप्रेसिंग माई थॉट्स. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड माई जर्नी थ्रू दैट कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के मैं कैसे ग्रो हुआ उस कॉन्सेप्ट में एंड इफ आई बिलीव इन गॉड इफ आई डोंट बिलीव. अगेन बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू से I am not some religious guru. I am far from it. I would say I am a questioner. I question things. I question things a lot. Matlab, I like to ask questions. I like to be curious about things. And I guess that is who I am as a person. First getting into whether I believe in God or not. Right now, I do believe in God. I did believe in God from the very start. ऑब्वियसली मैं बचपन में आई वॉज नॉट बिग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड बट श्योर एक वो बैक ऑफ द माइंड में होता है कि आई हैड रिलीजियस पेरेंट्स एंड दे प्रे एंड मंदिर है हमारे घर में, ये सब सबके घर में होता है. तो या श्योर आई वुड से आई ग्रो अप अराउंड एटलीस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड अराउंड मी. बचपन में आई नॉट अंडरस्टैंड इट अ लॉट बट श्योर मैन लाइक मतलब एवरेज था. मतलब ऐसा कोई डेप्थफुल बिलीफ नहीं थी और ऐसी कोई सरफेस लेवल बिलीफ नहीं थी. मतलब ठीक था कि ओके मैन मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा तो भगवान मेरे को प्लीज़ बचा लो, और कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर भगवान याद भी नहीं आ रहे, जो कि आई थिंक इट्स द केस ऑफ द एवरेज पर्सन वेरन हमें जब कुछ बुरा हो रहा होता है तभी भगवान याद आता है. ओके सो I did somewhat believe in God, or maybe like I was aware that okay maybe there is a God, and then I'd say last year I stopped believing in God. Why did I do that? And पिछले साल I don't know like 2024 में, mainly middle of 2024 में I just felt very disconnected and उसका main reason ये था कि so what happened was दैट मैंने ना ऐसे बहुत लोग देखे ऐसे जो साधु होते हैं जो आपके घर पे पैसे मांगने आते हैं या फिर खाना मांगने आते हैं एंड ऑल दैट स्टफ. नाउ दैट इज़ फाइन लाइक बट मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, या एक इंसिडेंट नहीं बट लाइक अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स वेरन आई सॉ वेरी यंग पीपल हु वर ड्रेस्ड इन सैफरन. नाउ आई एम अ हिंदू सो आई एम एक्सपोज टू दैट. अब हो सकता है बाकी रिलीजन्स में भी उनके तरीक़ों की ऐसी चीज़ें हों बट मैं इसी की बात करूँगा क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है. सो आई सॉ रिलेटिवली यंग पीपल जो साधु बने हुए थे. नाउ द कॉन्सेप्ट इज़ कि भाई तो इतनी यंग एज में पहले तो लाइक यू आर इन अ फंक्शनल एज माइंड यू दो यार लाइक यंगर देन माई फादर, वे यंगर देन माई फादर. मतलब ऐसे लोग जिनकी दाढ़ी भी पूरी दाढ़ी है और वो पूरी काली है, लाइक एक सफ़ेद बाल नहीं उनके चेहरे पे या उनके बालों में, एंड दे आर हेयर आस्किंग फॉर मनी इन द नेम ऑफ गॉड. एंड मेरा थॉट ये था कि मैन कम ऑन मैन लाइक you're a full grown dude and you're a full grown person and you're a grown up adult, and why don't you just go out and earn for yourself? A lot of times I did kind of sense it कि यार they are not coming from a place of purity or a pious place.
ऑल्सो मेरे साथ एक और इंसिडेंट हुआ था wherein two sadhus had come and one of them was this नागा बाबा. नागा बाबा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देखो, मेरी ऐसी कोई डेप्थफुल नॉलेज नहीं है, बट वो वाले साधु जो बिना कपड़ों के, ओके, एंड ऑल ही हैड वाज अ लिटिल क्लॉथ over his private parts. And so he came, and there was this other sadhu with him who was fully clothed. They both were relatively young. If I was to guess their ages, I would say they were both between their mid 30s and early 30s. So these two people come at my house. मतलब मेरे गेट पे, they rang the bell and then I went out. उनको पैसे देते हैं, right? So I took a 20 rupee note and I was like, ये ले. I was trying to hand it to him, and he, all of a sudden he was like, अरे हमने तो तपस्या करी है, हम 20 रुपए नहीं ले. And what he did next was he took his cloth and he just picked it up and he was trying to show me his private part. But obviously I did not look down. I was looking at him. I was looking at him in the eye. I was like, आपको चाहिए तो ले लो, वरना मतलब मैं नहीं देने वाला. He was like, हम नहीं लेंगे. And then I was like, ठीक है. And then I started walking back, and the other sadhu that was with him, he was like, मुझे दे दो. So I gave it to him. Just the dude, the other sadhu, the first sadhu. Then I just went back. I locked my gate and I was like, ठीक है, fine. That incident also did play a big part in the sense that, you know, you say कि तुमने ये करा है, वो करा है, and you somehow grew arrogant based off of it, man. Come on. Like, I don't think arrogance is something that to promote God in you, or even a sense of calm in you that I think the concept of God is supposed to instill in you, right? ये सब चीज़ें थी, ऐसे incidents थे, या फिर in general ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे I saw a lot of these sadhus asking for things and, you know, being a little greedy about it. कि अच्छा नहीं, हमें 100 दे रहे हो, 500 दे दो, 500 दे रहे हो, 1000 दे दो, 1000 दे रहे हो, 2000 दे दो, 5000 दे दो, 10,000 दे दो. It felt like a business deal. They were bargaining as to how much money they wanted. And so the concept of, okay, yaar, man, these people are supposed to be upholders of a particular religion, and they are the ones here who are like making demands. And why do you think you even are to, like, आप कोई धंधा थोड़ी ना कर रहे हो, राइट? सो दैट वाज माय थॉट, एंड आई वाज लाइक यार नहीं, ये गलत है, एंड आई फेल्ट रॉन्ग, एंड आई जस्ट फेल्ट वेरी डिस्कनेक्टेड विद द होल कॉन्सेप्ट कि इफ दीज आर द प्रोपेगेटर्स ऑफ रिलीजन, these are the propagators of God, then, like, is there something not wrong with God himself or herself or whatever? तो उस कॉन्सेप्ट से मेरे को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया कि लाइक आई वाज लाइक नहीं यार, लाइक इफ दिस इज व्हाट मैनिफेस्टेशन of believing in God is, I do not want to be like this. I do not want to be greedy. I do not want to be a person like this. मैं बहुत disconnect हो गया, and also other aspects of my life were very rocky at that point. काफ़ी चीज़ें ख़राब चल रही थी. अगर तुम देखो तो उस टाइम पे मैं शायद YouTube पे भी बहुत inactive था. It just became like a cocktail of mental what is the word for it? A mental breakdown, I would say, yeah. तो वैसी चीज़ें थी, and I got through that, and I came back to believing in God somehow. How did I get to that? I'll tell you in a sec. So ये atheist वाला phase था, ये पूरे एक साल चला, up until I would say I think May or June this year, like अभी June. Then again in June, after June I had this plan कि okay, now I want to focus on YouTube, क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम इसे देना था, and I have a very strong feeling this is going to work out. Right now I have, like, I think 627 सब्सक्राइबर्स, एंड मैंने कल ही एक और वीडियो डाली है, वो शायद कौन सा गेम है वो भूल गया, हाँ, बकशॉट रूलेट की वीडियो डाली है मैंने 25 अगस्त को. दिस इज़ लाइक अ टाइम स्टैम्प फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस. हो सकता है कोई कल को मेरी एडिट्स बनाए जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ तो उनको ये मिल जाए. ठीक है, खुद को गॉडली ना समझते हुए आगे बढ़ते हैं. मूविंग टू द बिलीवर फेज. हाउ डिड आई गेट इनटू द बिलीवर फेज अगेन? Okay, so I graduated, and after that I had this concept of कि okay, मेरे को करना है, अब YouTube करना है, मेरे को फुल टाइम इसको टाइम देना है. I मतलब उससे कोई गॉड रिलेटेड था नहीं, बट आई डिड रिमेंबर दैट 2023 में मेरा चैनल बहुत एक फेज आया था 3-4 महीने का, जहाँ पे आई हैड रियली रैपिड ग्रोथ, एंड उस ग्रोथ में आई वुड से दैट I had made God like a concept in my mind, but right now I do believe in God, so I would say there is a God. And yeah, so back in 2023, I would say
जब मेरे 100 सब्सक्राइबर से 100 से लेके आई थिंक आई ग्रो अप अंटिल लाइक 550 सब्सक्राइबर समथिंग, तो 550 के अराउंड में आ गया था. एंड या मतलब उस टाइम पे आई हैड गॉड बाय माई साइड, मतलब एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ बीइंग आई हैड बीन लाइक कि okay, I am uploading this, I am working hard, and I had sort of made a deal with God, not a deal with the devil, but a deal with God. I will work hard, and I will pray to you, and will work hard. Please help me out here. Please help me grow my channel. Like ठीक है बोलने को, it is a selfish need कि अगर मुझे कुछ चाहिए, but I think the concept of God really helps me get through those struggles and a lot of my mental battles as well. So that was the exact reason कि मैं उस टाइम पे ग्रो कर पाया था, बिकॉज अगर बीच बीच में कोई एक आध वीडियो नहीं भी चल रही, देन आई वाज लाइक नहीं, गॉड इज देयर एंड ही इज वॉचिंग. एंड मैं हनुमान जी में बहुत मानता हूँ, तो दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड दैट आई हैव. हनुमान जी मेरे को लाइक ही इज देयर, ही इज वॉचिंग एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी. आई वाज ऑलवेज लाइक हनुमान जी प्लीज ये कर दो, हनुमान जी प्लीज वो कर दो. एंड या मतलब लिटरली मैं ऐसे ही बात करता था. आई केम बैक टू दैट रिसेंटली, एंड यू नो उसका एक कॉन्सेप्ट ये भी था, बिकॉज मेरे को पता था कि यू नो पहले मेरा चैनल ग्रो हो रहा था. आई हैड काइंड ऑफ टेकन गॉड इन अ पार्टनरशिप विद मी, इफ दैट इज समथिंग that now I do pray every day. मैं हर बार like I am going through a difficult phase और ऐसा कुछ भी, I just stick to the concept of God and I'm like कि नहीं, मेरे को ऐसे ही रखना है. तो एक वो चीज़, वो एस्पेक्ट बहुत है, that is a very good incentive for me at least to believe in God, and it actually helps me keep sane. अब I do not know कि हो सकता है ये पूरा एक mental structure की वजह से हो कि आपको you have thought of something that is way more powerful than anything, any being you have ever seen, and the God Almighty, right? You have put faith in the most strongest being there is. How much mental strength do you think that it will give you? Okay, there is something that is above all of us, everything. लाइक ह्यूमन, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, कोई मतलब हर चीज़ से ऊपर है कुछ. एंड यू नो टू जस्ट पुट योर फेथ इन समथिंग दैट पावरफुल, आई थिंक इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ होप. नाउ कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, there could be a factor where maybe God doesn't even exist, and this very concept has been made around us, not just Hinduism or Islam or Christianity. Like the concept of God himself has been made so that we move forward, we are hopeful. I think that could be a core principle of it, hope. Maybe it is because of hope, maybe it is because when the hard times come, you can latch on to a belief that is way beyond you. मतलब ये भी हो सकता है, like I don't know, and I do believe in God. तो मेरे को तो लगता है कि yes, there is a being, because I pray every day and I think of this and I work, and then I'm like, please help me grow, and it grows. Like maybe it's just my work, but it's making me more efficient in my life. So I would say that believing in the concept, if it actually helps you, then why not believe in it? But also a lot of people who believe in God become very gullible कि उन्हें तुम भगवान के नाम पे उन्हें ठग सकते हो. अब तुमने ये नहीं करा तो भगवान ये हो जाएगा, अब तुमने ये नहीं करा तो भगवान ये हो जाएगा. तो दैट वहाँ भी एक पोलर ऑपोजिट हो जाता है कि ओके, कि भगवान के नाम पे लोगों को डराया जाता है. सिर्फ लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर रिलीजन हियर, आई एम टॉकिंग इन जनरल कि लाइक ओके गॉड विल स्ट्राइक यू डाउन एंड भगवान भस्म कर देंगे तुम्हें, या ऐसा कुछ, ये सब लाइक मतलब ऐसा कि लाइक गॉड is used to instill fear in people. I do not think the people using God for their influence is absolutely wrong, and I do not think that is God. Okay, मैंने आज भी लिख रखी है, मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि मैंने लिख रखा था कुछ, आज भी मैंने लिख रखा है, देख लो. तो the next is why is God needed. So मैंने तुम्हें पहले भी बताया that why did I end up believing in God again is because I needed a support system. I needed a structure in my head to think about things and a plan to grow. तो अगर उस कॉन्सेप्ट में और उस स्ट्रक्चर में मैं गॉड को ऐड करता, then it definitely made me more efficient and it made me more hopeful that something that I'm doing would grow. तो I think वहाँ पे a lot of basis of God is needed, and like
in times of hardships, I think God is very important to be kept by your side, जो कि ज़्यादातर लोग करते भी हैं कि जब उनको ज़रूरत होती है सिर्फ वो तभी भगवान को याद करते हैं. But now I am making it a point to, I mean, not only just pray when I need something from God, no, like just make him a part of your life, right? So yeah, matlab, I think that is the central concept of why God is needed. That at least that is what I think, that it is a very strong concept that gives people hope. Like कितने लोग हैं जो मैंने अनगिनत बार सुन लिया ये कि I had no one but God, I had no one but God, I had no one but God. So जो अकेला होता है I guess उसके लिए एक बहुत strong concept है God. And even if like the very powerful people also believe in God and they pray and वो ये सब करते हैं so that they can maybe like maintain whatever they have or grow, because even they maybe realize that this is something way beyond them too, even if they're one of the most influential people in the world or in the country or in the state or in whatever. They do realize that there is something above them. So yeah, I think that is why the concept of God is needed. It's because it gives people hope, and it provides a very good form of structure. Okay, now we get into a little more controversial part. Which God is real? And to be frank with you, I don't know. And again, if which God is real is even a question, is God even real? Because see, it cannot be that Europe was made by a different God and India was made by a different God and China was made by a different God and Middle East was made by a different God. No, I don't think that's how it functions. Every religion itself says that God made the earth, God made humans. So why is it that everybody is following some different God? Because humans, we are the same, right? अगर हम सबको 1000 दफा भी दफना दो और 1000 साल बाद हमारी हड्डियाँ निकालो तो I do not think we would have different DNA on basis of okay ये तो इस God का है वो इस God का है. So I don't know which God is real, and this again, this is one of the questions that I don't have the answers to. I don't have answers to a lot of questions. But ये मेरी curiosity का एक बहुत major source है कि if there is really a God, why would the God even let things like this manifest? Because you see a lot of मतलब देखा जाए तो religious divide is a very 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 deep divide. Like if you're a religious person, you would like मैंने बहुत देखा है see, and हम सब यहीं पे like I think everybody who has exposure to the outer world would see that ये चीज़ कितने लोगों को divide करती है. I am a religious person, I do believe in God, but I do not think I would hate someone who believed in a different God or who would not believe in God at all. As long as they're morally good, I do not care. I would talk to that person, I would sit to that person, I would share a meal with that person if I had to, regardless of what their beliefs are, as long as they're good people. So yeah, I mean like I don't know which God is real, and I do believe it. मैं हनुमान जी में मानता हूँ, तो he is definitely real for me. अब किसके लिए और कुछ होगा, किसी के लिए और कुछ होगा, but yeah, I don't know which God is real, man. Like I would like to know your opinions in the comment section. So yeah, comment down. Another thing that comes up about whether God exists or not is लोग बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ये तो कि if there is a God, why is there so much pain in the world? And yeah, मतलब ये question मैं भी पूछता हूँ, मतलब खुद से भी, and कोई और मेरे को रिलीजन प्रोपोगेट करता है तो मैं उससे भी यही पूछता हूँ that if there is a God, why is there so much pain? Like there is so much suffering. थोड़े दिन पहले एक केस हुआ, I don't know, that a woman was burned for dowry. I don't know क्या केस है क्या नहीं है, but these were the headlines. So if there was a God, why was that woman burned? Why were like all the crimes that happened? Why do people commit suicide? Why do people get to a place in their lives where they have to commit suicide? So why is there so much pain in the world? And then at least हमारे religion में, Hinduism में, there's this concept of past life. There's this concept of karma कि अच्छा आप इस जन्म में इसलिए भोग रहे हो कि आपने अपने पुराने कर्मों में कुछ बुरा करा. Which concept does not sit right with me, to be very honest with you. Because मेरे साथ आज कुछ बुरा होता है तो I do not think I want to put in the concept of कि अच्छा नहीं मैंने पिछले जन्म में नहीं यार, I don't know. इस हिसाब से तो I would have zero control over my life at all ना. इस हिसाब से तो मेरी जो चीज़ें जो आगे होने वाली हैं, जो पहले हो गई हैं, वो तो सब लिखी हुई हैं.
है ना. एंड ऑल्सो आई डू एग्री दैट थोड़ा ये कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा तो थोड़ा और डेप्थफुल है. लाइक इसमें अभी और भी है कि अभी जो हम कर रहे हैं वो आगे भी काम आएगा. लाइक विच इज़ ओके कि अगर तुम आज बीज बो रहे हो तो कल को तुम्हें पेड़ भी मिलेगा उसका. तो दैट इज़ लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा. अगर आज तुम पेड़ काट रहे हो तो वो कल को तुम पे ही गिरेगा. तो फिर वो भी है. लाइक आई डू गेट इट बट द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट लाइफ इज समथिंग दैट डजंट रियली सिट राइट विद मी मच. सो या दैट इज अनदर क्वेश्चन. लाइक why is there so much pain if God exists, right? Yeah, I don't know. I'm just posing these questions, and like I don't know who will answer them. I don't even know if somebody will answer them in the first place. But ठीक है, ये thoughts हैं मेरे, and this is just a thought series, and I'm just sharing just a thought, right? Another question is, if God is real, why are there different religions? वो पहले why which God is real वाला. Why are there different religions, and why is there conflict in the name of God? कि अगर एक ही भगवान है तो अलग अलग भागों में क्यों बट गए हैं हम लोग. एंड व्हाई इज देयर कॉन्फ्लिक्ट इन द नेम ऑफ गॉड. लाइक इफ आई वाज समवन, राइट, इफ आई एम नॉट गॉड, आई एम nowhere near godly, but if I was put in a place of power, right, like okay, I am a father, I have 2 children, why would I want them to identify me differently, and why would I want them to fight based off of what they identify me as. Like उन दोनों को मैं तो वही बताऊंगा ना कि हाँ मैं तुम्हारा फादर हूँ और मेरा नाम ये है and मैं यहाँ से हूँ and ऐसा ऐसा ऐसा. So like I would make sure that both of them had the same at least basis of identity for me. कि मेरे को identify कैसे करोगे तुम कि मेरा नाम ये है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसा नहीं दिखता हूँ, बस. तो मतलब एटलीस्ट बेसिक्स तो उसके सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए. एंड काफ़ी रिलीजन्स में सिमिलैरिटीज़ हैं भी if you really go into it, but काफ़ी religion में similarities है बिल्कुल भी नहीं है. And like yeah, sure man, like in the name of religion there is a lot of bad happening as well. I'm not saying one religion, I'm saying every religion has bad things happening in it, good things happening in it. Yeah man, this is like the questions I'm posing to. I don't know who, maybe you could answer this, maybe no one could answer this, maybe I am stupid and I don't need answers in the first place because stupid people are stupid. Why do you need to answer that? So yeah, well, ye tha. This was it for this video, the concept of God. Do tell me if you liked it and do tell me if I'm stupid. Yeah, that'll be it for this video guys. I'll see you in the next one probably. और भी गेमिंग वीडियोस आ रही हैं और पहले भी डाल दी हैं, आगे भी डाल दूँगा. बैड पेरेंटिंग की वीडियो डाली है एंड जो बकशॉट रूलेट की भी डाली है एंड आगे भी आएंगी. आई डोंट नो कौन से गेम्स की, बट कुछ ना कुछ आता ही रहेगा. सो यस, बी श्योर टू स्टिक अराउंड द चैनल मोर. इफ़ ये वाली सीरीज़ तुम्हें अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना. मैं जनरली बोलता नहीं हूँ बट आज मेरे मुंह से निकल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं. यस गाइस, सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. इफ यू लाइक्ड इट, बी श्योर टू स्टिक अराउंड द चैनल मोर. सी यू इन द नेक्स्ट वन.